ભાવનગર સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એન્ડ મરીન કેમિકલ્સ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના 72મા સ્થાપના દિને વિશ્વને આપશે નવી ભેટ. આધુનિક વિશ્વ કક્ષાના પ્રાયોગિક મીઠાની ગુણવત્તા અને ઉત્પાદન કેવી રીતે વધારવું તેવા કાર્યસ્થળનું કરાશે ઉદ્ઘાટન. સીએસએમ સીઆરઆઈના ડિરેક્ટર ડોક્ટર કનન શ્રીનિવાસીને કહ્યું હતું કે અમારી સંસ્થામાં મીઠું અને દરિયાઈ રસાયણશાસ્ત્ર સંસાધનના ક્ષેત્રમાં આધુનિક સંશોધન અને ટકાઉ પ્રથાઓ અમારી ઓળખ છે. આ સુવિધા આપણી ક્ષમતાઓમાં વધારો કરશે અને નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપશે, જેનાથી વૈજ્ઞાનિક અને સમુદાય, ઉદ્યોગ અને સમગ્ર સમાજને ફાયદો થતો. ડાયરેક્ટર જનરલ ડોક્ટર એન કલસેવી સીએસએમ સીઆરઆઈના યોગદાનના મહત્વ પર ભાર મૂકતા કહ્યું હતું કે સીએસએમ સીઆરઆઈ વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિનું દીવા દાંડી રહ્યું છે અને આ નવી મોડર્ન એક્સપેરિમેન્ટ સોલ્ટ વર્ક્સ સુવિધા મીઠા અને દરિયાઈ રસાયણશાસ્ત્રના ક્ષેત્રમાં નવીનતા લાવવા અને નેતૃત્વ કરવાના મિશનને વધુ મજબૂત બનાવશે. તેમણે ભારતના મીઠા ઉદ્યોગ પર આ નવીનતમ સુવિધાના પરિવર્તનશીલ પ્રભાવ અને નવીન સંશોધન અને ટકાઉ મીઠા ઉત્પાદન તકનીકો વધુ આગળ વધે તેના પર ભાર મૂક્યો છે. જે કેસની ગુજરાતી સાથે હિરેન ભાયાણી, ભાવનગર. So when the entire country is really feeling so proud about Gujarat for a number of reasons, we from CSIR, we take the pride in the name of this particular institute called CSIR, CSM CRI Bhavnagar. And I'm being told that this place is shortly known as Salt Institute because the main important points that are being taken into consideration in this laboratory are water, drinking water, potable water, and the other one is salt. And in India, we many times feel that after a particular year, particular age, human cannot consume salt in the way he or she wants to take. But now this laboratory is giving extra attention and care to ensure, can we just come up with a kind of a low sodium salt so that by eating I'll get both the satisfaction without giving any kind of a threat to my health. That is number one. And similarly, can I come up with a kind of a concept of halophytes wherein something like a vegan leather, can we just come up with a kind of a vegan salt? There is salt from the plant origin which will be naturally having potassium rich, therefore we need not worry about the sodium. So this is how, with the changing trends in the lifestyle and the changing requirements and the expectations of human for their lifestyle, for all age group, technology and innovation related challenges are being addressed by this particular laboratory. And we can proudly say, whatever this country is having the salt related science, technology and innovation, it is just because of this particular institute. And this institute is also ensuring, apart from salt, we will definitely make this salt water into potable water. So that technology tomorrow we are going to showcase at a particular level. If at all somebody wants to come up as a kind of an entrepreneur or to come up with a kind of a salt related business, can we just come up with a kind of a modern salt work? So you would have heard about fireworks, we are talking about salt work. So we'll make the country to work more on salt, and whenever you get tired, you take water and salt and say thanks to CSMCRI. धन्यवाद. मेरा नाम डॉक्टर कन्नन श्रीनिवासन है. कल हमारा संस्थान को केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान का 72nd स्थापना दिवस है. इसमें हम लोग एक वर्ल्ड क्लास एक्सपेरिमेंटल सॉल्ट वर्क्स कुंभरवाड़ा में हमारा एक्सपेरिमेंटल सॉल्ट फॉर्म में 180 एकर्स को एक लैब बना के वहाँ पे नया टेक्नोलॉजीज को वहाँ पे डिप्लॉय करके सॉल्ट को उत्पादन किस तरीका बड़ा कर सकते हैं, सॉल्ट को क्वालिटी का किस तरीका बेहतर कर सकते हैं, ये हम करने वाला है. कल इसका उद्घाटन हमारा महानिदेशक डॉक्टर कलेसेल्वी, डायरेक्टर जनरल CSIR एंड सेक्रेटरी DSIR, उनका हाथों से ये इनॉग्रेशन होगा. पहले चीज ये है, हमारा आशा यही है, इंडिया का सॉल्ट इंडस्ट्री इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बिकॉज मेरे लिए सॉल्ट एक माँ का केमिकल है, मदर केमिकल बोलता हूँ मैं तो ऐसे ही मैं पूरा संस्थान और जो भी फोरम है उसमें मैं बता देता हूँ. और ये हमको जितना बड़ा होता है उतना हमारा केमिकल इंडस्ट्रीज को फायदा होता है और उसको हमारा ये नया टेक्नोलॉजीज हम तो डेवलप करते वक्त किस तरीका हम तो
बड़ा स्केल में डिप्लॉय करेगा तो उसको वहां से लेके एक कमर्शियल स्केल सॉल्ट वर्क्स विल बी इन थाउजेंड्स ऑफ एकर्स। एक बीच वाला जगह होना बहुत जरूरी है और ये बीच वाला जगह का हम तो कल इनॉग्रेशन कर रहेंगे और आशा यही है ये जो मॉडल सॉल्ट वर्क्स एक एग्जीबिशन सेंटर जैसे होगा पूरा भावनगर सिटी के लिए, ऐसा साइंस एग्जिबिट। ओके, प्राउडली आपको ये कर सकते हैं, आपका फैमिली को भी लेके जा सकते हैं किस तरीका सॉल्ट का किस तरीका उत्पादन कर रहे हैं और नया नया टेक्नोलॉजी किस तरीका जोड़े हुए हैं, एक सॉल्ट एग्जीबिशन जैसे भी कर सकते हैं। मेरा आशा यही है ये प्लेस एक टूरिज्म जैसे, साइंस टूरिज्म जैसे भी काम करने के लिए मेरा आशा यही है। और इसके देख के हमारा सॉल्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज पूरा ये जो टेक्नोलॉजीज को उनका प्रीमाइसेस में डिप्लॉय करके और उनको डिप्लॉय करने के माध्यम से सॉल्ट प्रोडक्टिविटी हमारा देश को किस तरीका बड़ा करेगा और उसका कारण की वजह से हमारा देश का केमिकल इंडस्ट्री किस तरीका आगे बढ़ेगा, यही हमारा कल का प्रोग्राम का मुख्य रूप है।